नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की। भाजपा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में गृह मंत्री ने दोहराई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्धता। अमित शाह ने कहा, बीते एक दशक में भारत के अंदर आतंकवाद के खिलाफ बना मजबूत इकोसिस्टम। कर्नाटक दौरे पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल। बीजापुर में वक्फ के खिलाफ शिकायत करने वाले किसानों से की मुलाकात। देश भर में बिखरी छठ की रौनक। आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना समेत तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी। त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की पहल। शुक्रवार से चलाई जाएंगी 164 स्पेशल ट्रेन्स। और इन सभी खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के एक दशक पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। ये हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का फैसला लंबे समय से चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले एक दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे OROP हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। और वन रैंक वन पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत समान रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाती है। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उनके परिवार को आर्थिक रूप से अधिक संबल मिला है। वहीं इस योजना का लाभ ले रहे नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त राजेंद्र बुढ़ानिया और शहीद कंवराज सिंह की पत्नी सुमन कंवर ने भी इस योजना को सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी बताया है। सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा नहीं बोल रही हूं कि मेरे कोई मिलनी चाहिए, मेरी बहनें काफी है, मेरे जैसे सबको बराबर मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिलीज बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है, वो अपने नाम से अंडरस्टूड है। वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है, आ जाए चाहे आज के 15 साल पहले आए, उसके समान पेंशन होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये स्कीम है। और केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद फौज से रिटायर्ड हुए लोगों में खुशी की लहर है। प्रयागराज में सेना के जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने इस योजना को लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। वन रैंक वन पेंशन बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसका जो है सभी पूर्व सैनिक अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और सरकार जो है इससे और बढ़िया से जो है हमारे को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की ये वन रैंक वन पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है। वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और इसका भरपूर लाभ हमें मिल रहा है। इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 2014 से लागू हुआ, फिर 19 में लागू हुआ। इस बार तो इतना बेहतर हुआ कि कम से कम
जब उसका टाइम था, समय था, उसी समय लागू हो गया और उसका एरियर भी जो भी जिसका जितना बना उसी समय दे दिया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इस वन रैंक वन पेंशन को काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, चर्चाओं में है, लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे सारे पुराने जो वन रैंक वन पेंशन की जो नियमित थे, जो लोगों ने मांगा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम इस चीज़ से खुश हैं और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि जो सैनिकों की जो ऐसी डिमांडें होंगी उनको मानेंगे और इनके काम से हम बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं। बढ़ेंगे आगे। कैबिनेट की ओर से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के सराहनीय कदम को लेकर आगरा में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने प्रशंसा करते हुए खुशी जताई है। छात्रों का कहना है कि अब धन की कमी उनके सपनों के आड़े नहीं आएगी। हम लोग पहले लोन लेते थे और काफ़ी इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता था अपनी स्टडीज़ के लिए, तो अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा। उसके द्वारा हम अपने फ्यूचर को अच्छे से बना सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। डॉक्टर, IIT, नीट वगैरह की हम तैयारी कर सकते हैं। पढ़ नहीं पाते थे एजुकेशन, वो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। उन्होंने जो लोन दिया है 10 लाख तक का, उससे हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, जिससे कि हम जो आगे करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इस योजना की शुरुआत करने से हम अपने बच्चों को गारंटर मुक्त लोन भी ले सकेंगे और उनको हायर एजुकेशन भी दिला सकेंगे। साथ ही साथ हमें किसी और दूसरे पर्सन से लोन या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम एक हायर पोजीशन पर पहुंचने का एक सपना भी देख सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे भी ऐसी योजनाएं लाते रहें, जिससे हम पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको कोई सोच विचार नहीं करना पड़े। हम जैसे गरीब लोग जो पहले कभी अपने बच्चों को। और आपको सीधे ले चलते हैं। इस वक्त विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। That they have had to cancel the consular camp that they were planning to organize over the weekend because they did not get adequate security or security assurance from the host government. So that was the reason why these consular camps have been cancelled. As you know, we have a large diaspora in Canada. Many of these people, especially around the month of November, December, they need several documentation for continuation of their pensions and several other activities here in India. So this consular camp that we do is helpful to the community, to both people of Indian nationality and people who are of Indian origin but Canadian nationals today. So that is the reason why the consular camps have had to be cancelled. But I do understand that in other parts of Canada, Vancouver for example, the consular camps will be conducted. These consular camps are conducted at the request of the community organizations. So where the community organization is comfortable, we will go ahead with these consular camps. The other question you had about was about recent escalations, etc. On that, you have seen our comments that we made. We condemned the attack on the temple in Brampton, and we also called upon the Canadian government to uphold rule of law and to bring to justice people who perpetrated the violence. We hope that the Canadian government will take due action. Uba, on your question, Kabul पे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान देखते हैं हमारे मंत्रालय में, JP सिंह, उन्होंने यात्रा की अफगानिस्तान की, काबुल में। वहाँ पर ये 4 और 5 नवंबर को हुआ। वहाँ पर उन्होंने कई एक मंत्रीगण से मिले और कई एक वहाँ पर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, खासकर जो मानवीय सहायता हम देते हैं अफगानिस्तान को। इस बात पे भी चर्चा हुई कि चाबहार का जो बंदरगाह है उस पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों की नई एक संधि हुई थी, एक नया अरेंजमेंट आया है। किस प्रकार से अफगानिस्तान के जो व्यावसायिक समुदाय हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, उन लोग किस प्रकार से इस बंदरगाह का, इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नया एक कनेक्टिविटी का एक नया कॉरिडोर जो स्थापित हुआ है। उसके अलावा
आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ महीने में और पिछले सालों में हम लोगों ने कई एक प्रकार से मानवीय सहायता अफगानिस्तान को मुहैया कराया है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 40,000 लीटर मेलाथ्योनिन जो कि एक पेस्टिसाइड होता है उसका मुहैया कराया है, और उसके अलावा 300 टन हमने दवाइयाँ भी उनको भेजी है, और 28 टन जो अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल होता है वो भी हम लोगों ने उनको प्रदान किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज़मीनी स्तर पर, समाज के स्तर पर अफगानिस्तान के साथ, वहाँ के लोगों के साथ बहुत पुराने संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, और ये संबंध हमारे जो अप्रोच है उस देश के साथ वो आगे इसको गाइड करता रहेगा। So we had a delegation led by Mr. J.P. Singh, who is the Joint Secretary in charge of Pakistan, Afghanistan, Iran in the Ministry of External Affairs. He visited Kabul on 4th and 5th of November. During the visit, he had several meetings with the Afghan minister, including with the acting defense minister. He also called on former President Hamid Karzai. He also met the head of UN agencies there and several other senior ministers. They had some discussions on the India's humanitarian assistance that we're providing to people in Afghanistan, as also how the Chabahar port can be utilized by the business community in Afghanistan for transactions and for export and import and any other thing that they would like to do for. I also want to recall here that providing humanitarian assistance to Afghanistan is an important part of our assistance program, and so far in the last few months and few years, we have dispatched several shipments of humanitarian assistance, which includes 50,000 metric tons of wheat, 40,000 liters of melathronium, which is a pesticide, 30 tons of medicines, and 28 tons of earthquake relief aid. We have, as you know, we have long-standing ties with the people of Afghanistan, and these ties will continue to guide our approach towards the country. Krishmohan ji, you would have seen our statements that we made condemning the incident of violence in Brampton. You would also have seen that our Prime Minister also expressed and strongly condemned what's going on there. We hope that the Government of Canada will take due action, strong action against the perpetrators and uphold rule of law. That is what our expectation is. Aishi, External Affairs Minister, is in Sydney today. You would have seen that he was some time back speaking to the business community, CEOs. He was addressing a CEOs roundtable. He also had a meeting with Australian Foreign Minister, where they together attended the 15th India-Australia Framework Dialogue. As part of the dialogue, all issues were discussed, and yes, External Affairs Minister did discuss all our security concerns that we have with Australia. So I would like to confirm that for you. Ishi, on India-US ties, see, look, this India-US partnership is a very special and a multifaceted partnership. Our Prime Minister spoke to President Trump yesterday. Before that, he also sent a message on X post congratulating him on his historic election victory. As fellow democracy, India celebrates this expression of people's mandate in the United States. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely, as he had done with him earlier as well, closely to further strengthen India-US comprehensive global and strategic partnership. Both India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity.
So we want to further strengthen our partnership, and we look forward to it. As far as your questions regarding what sort of approach they will have on X country, etc., these are questions which the US government would answer for you. Can we go forward? Siddhant? Hi sir, I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, I have two questions. One is it true that social media pages of Australia Today, a prominent media outlet in Australia, has been banned in Canada? And my second question is, sir, regarding the state of Mizoram. Chief Minister of Mizoram, Lal Thoma, made a speech in the United States on 4th September, where he spoke about the unjustly divided Zouk community and said we are forced to live under 3 different governments between India, Myanmar and Bangladesh. Sir, want to know your response on the Chief Minister's reaction, and also did the team from the government visited Chief Minister after this statement? Thank you. Okay. Yeah, Ranjan. Ranjan Sharma, RT. This is in continuation with the India-Canada story. Just for a bit more clarity, did India ask for security for the consular camps, and was that denied by Canada? Okay. Keshav? Sir, this is Keshav Padmanabhan from The Print. Just following up on Canada, can you give us a sense of whether in the last year, since the Chilean diplomatic ties, whether there has been more threats to our diplomats and consular officials in Canada, whether the threats have increased against them, and a sense of whether there have been any other incidents with regards to our consular camps in the recent past that have been threatened by violence. And just secondly, on the EAM's visit to Australia, he had said that we are working proactively on peace in different regions. Could you just give us a sense of, what he meant by the kind of steps that we are taking to support peace in Russia, Ukraine, as well as the Gaza conflict? Thank you, sir. Okay. Ashok? सर अशोक हूँ जी न्यूज़ से। फिर से खबरें आ रही हैं बांग्लादेश के चिटागोंग में कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर फिर से अटैक हुआ है, और क्या ये जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं ये सही हैं, और इसका आधिकारिक रूप से एमईए ने फ्लैग ऑफ किया है क्या इस मैटर को? ठीक है, अभिषेक. Sir, Abhishek Jha, I'm an independent journalist. My question is regarding Pakistan's Punjab province chief minister has said that they would like to have a climate diplomacy with India, especially in the wake of this smog, which is impacting both sides of the border. So what is India's take on that? Okay. So first, Siddhant, regarding your question about Canada blocking or banning Australia, the prominent outlet there, Australia Today. Yes, you have heard it correctly. We have also seen that we understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just an hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. And the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister, as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I would say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about 3 things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked by Canada.
regarding a question on Mizoram, I have not seen those comments, so but I will come back to you. These are we have had issues there because of Myanmar security situation. We've talked about fencing also earlier, some of the proposals that are there in the offering. So I'll come back to you after we have some clarity on that. Runjhun, yes, I would like to tell you that we had asked for security to be provided for our diplomats where the consular camp was to be held, and those have not been provided by the Canadian side. Keshav, I have been here for a year or so, or little less than a year, but have been following developments in regard to Canada-India relations. You would have seen over the last year or even more the kind of things that we've seen attacking Indian diplomats, threatening, intimidating, harassing Indian diplomats. I was myself based in New York, so there also I have had a close engagement on these issues. So I would say yes, the threats have increased. Surveillance, we talked about surveillance in my last engagement, that surveillance, Indian diplomats are put under surveillance, which is totally unacceptable. The External Affairs Minister also has spoken about it. We had we had also taken up the matter very strongly with the Canadian side on it. On EM's visit on peace, of course, you know, when foreign ministers of two countries meet, when External Affairs Minister goes abroad, he talks about geopolitical issues, regional issues, global issues, and in that peace plan, or sorry, peace initiatives, what's happening in West Asia, how things can be, how things should be better, what can be done to improve situation in Russia, Ukraine. On Russia, Ukraine, you know what our position is. We want to, we emphasize on dialogue and diplomacy as a way forward. We've also made it very clear that India stands ready to contribute in whatever possible manner we can, so that there'll be peace in that part of the world. So all these issues, these are important issues. They were discussed as part of his engagement with the foreign minister. We've also had a readout, a press release issued, which will give you more details on that account. अशोक, चिटगांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे। वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेके थी, उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। और हमारा ये बड़ा ये इस पहल से, इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ पर समाज में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो हमारा आग्रह है और वहाँ के सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये उनकी खास जिम्मेवारी है कि सुरक्षा उनको दिया जाए। काफ़ी सारे वीडियो हमने देखे हैं, अभी आप लोगों ने देखा हुआ सोशल मीडिया में, काफ़ी चल रहा है। वहाँ पर लूटपाट हुई, उनको धमकाया गया, उनको मारा गया, ये निंदनीय है। Okay, see, we have observed that there have been recent attacks on Hindu community in Chittagong. Their properties have been looted, their business establishments have been looted, and these happened following incendiary posts on social media targeting Hindu religious organizations. It is understood that there are extremist elements who are behind such posts and such illegal criminal activities. This is bound to create further tensions in the community. We yet again urge the government of Bangladesh to take strong measures
to ensure the safety of Hindus and to take action against extremist elements. Abhishek, regarding your question on climate diplomacy, so far we have not heard anything formally from the Pakistan side. Can we go forward? Shruti? So just a clarification, if you could give us on the Afghan visit. Is it the first official meeting that India is having with the Afghan Defense Minister? And on the issue of humanitarian aid, did they identify anything, sir? Sorry, on humanitarian aid, what did you say? Did Afghanistan ask for anything? Okay. This is Suhasini Heather from The Hindu. I wanted to ask, there's been this conference hosted by the ICWA this week for Myanmar rebels, ethnic armed organizations, as well as the rebel NUG government. On the 11th of November is when it's expected to be hosted actually. Wanted to know whether India is planning to have any kind of a role in a ceasefire, negotiating a ceasefire between the junta and the rebels over there. Divya? So, Divya from the Indian Express. We had seen reports that Nepal is printing new currency notes with a revised map, with Indian territories included. So, any comments on that? Okay. Jugal? Yeah, hi, so this is Jugal from the BBC. So could you give us an update on where the disengagement process with China is at? And in the wake of the Galwan incident, we had seen that the Indian government had imposed several additional economic measures as well as, banning of social media. Have negotiations or talks also looked at those areas, and any progress, if at all, on that, you can let us know. Okay. Neeraj? सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। पिछली बार ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड टैरिफ की बात करें या वीज़ा को लेकर खासकर H1B वीज़ा, L1 वीज़ा की बात करें तो ट्रंप सरकार का रुख बहुत कड़ा था। भारत सरकार नई ट्रंप सरकार से कैसे इंटरैक्ट करेगी दोनों मसलों पर? Sudhi, first your question. Yes, I do understand that this was the first meeting with the interim defense minister of Afghanistan. On the humanitarian aid, I don't have any detail as to what aid they asked for, but I can tell you that this formed the centerpiece of the discussion between Joint Secretary Singh and the Afghan delegation in several other meetings. Suhasini, on your question regarding ICWA hosting a workshop, yes, we did have a workshop, which I understand, on 5th and 6th of November. As an important neighboring country of India, developments in Myanmar are naturally of interest to us and to other stakeholders, including our academic community, our think tank community, and our business community. They have been, over a period of time and off and on a regular basis, organizing some interaction with various stakeholders in Myanmar. And on 5th and 6th of November, I understand, the Indian Council for World Affairs, they organized one particular workshop on Indian experience on constitutionalism and federalism, where they invited stakeholders from various segments of. तो फिर चाहे वो कनाडा की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, इन तमाम विषयों पर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, वो इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे थे। तो इन तमाम विषयों पर वो जो सवाल पूछे जा रहे थे प्रेस की तरफ से, उनका वो जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। खुद को
को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the